Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to take last topic of lesson number 3, clothing and clothes worn in different seasons. Children, do you know why do we wear clothes? We wear clothes to cover our body and to keep ourselves warm. They protect us from sun's heat, cold, rain, dust and dirt. It is one of our basic needs. Children, clothes also make us look good and smart. They also protect us from insect bites. बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि क्यों हम कपड़े पहनते हैं? हम कपड़े इसीलिए पहनते हैं ताकि हम अपने जिस्म को कवर करें और ये हमें बचाते हैं सूरज की गर्मी से, ठंड से, बारिश से, गर्द गुबार वगैरह से। ये हमारी एक ज़रूरत होती है। कपड़े पहनने से हम अच्छे लगते हैं। न ये कपड़े हमें सूरज की गर्मी, ठंड, बारिश वगैरह से बचाते हैं, बल्कि ये हमें कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। So we should wear clean clothes. तो हमें इसीलिए चाहिए कि हम साफ और शफाफ कपड़े पहने। Children, we know different types of cloth materials are used to make clothes. Now, let's take two different types of fiber. One is natural fiber and another is synthetic fiber. कपड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनमें फाइबर का इस्तेमाल होता है। आज हम दो फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक तो नेचुरल फाइबर है और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। Now let's talk about natural fiber. Natural fibers are the fibers that we can obtain from plants and animals. From plants we get cotton and jute, and from different animals like sheep we get wool, like silkworm we get silk, and from crocodile we get leather. Natural fiber हमें पेड़ों और जानवरों से हासिल होता है। जैसे पेड़ों से हमें कॉटन और जूट मिलता है। एनिमल से लाइक शीप से हमें ऊन हासिल होता है, जिसके हम फिर वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं। इसी तरह से हमें सिल्क वर्म से रेशम मिलता है, जिससे हम सिल्क क्लॉथ्स बनाते हैं। इसी तरह क्रोकोडाइल से हमें लेदर मिलता है, जो क्रोकोडाइल की स्किन होती है। आफ्टर डेथ उनकी जो स्किन होती है, उनसे हम बैग्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, शूज़ वगैरह बनाते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. Synthetic fibers are the fiber which we human being use to make it. That is also called as man-made fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and terry cotton. Synthetic fiber वो फाइबर होता है जो इंसान बनाते हैं। इसको हम man-made भी कहते हैं, man-made fiber. जैसे इसमें एग्जाम्पल्स है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड टेरी कॉटन। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट क्लॉथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स लाइक समर, विंटर एंड रेनी सीजन. लेट्स टॉक अबाउट समर सीजन फर्स्ट. इन समर we need to wear clothes that keep us cool and absorb sweat of our body. For that, we use light cotton clothes such as cotton dress and kurtas. बच्चों, अब हम देखेंगे कि कौन से कपड़े हम किस मौसम में पहनते हैं। जैसे समर में कौन से कपड़े पहनेंगे, विंटर में कौन से और रेनी सीजन में कौन से कपड़े पहने जाते हैं। गर्मी के मौसम में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े। इनसे हमें ठंडक महसूस होती है और ये हल्के भी होते हैं, और जो हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता है वो भी ये कपड़े जज़्ब करते हैं। नाउ वी सी इन विंटर व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर.
In winter, we wear woolen clothes such as sweaters and woolen trousers because they keep our body warm. In very cold places such as high mountains, people wear clothes made of fur or leather to keep themselves warm. सर्दियों के मौसम में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म को सर्दियों में गर्म रखती हैं। जैसे स्वेटर्स, ग्लव्स हम पहनते हैं या कश्मीर में अगर हम देखेंगे हम वूलन के फेरन्स भी सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, वहाँ पे हम फर या लेदर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े हमें गर्म रखते हैं। Now let's talk about rainy weather. We use clothes like raincoat and gumboots during the season. These clothes are made of synthetic material which are waterproof material, so these clothes protect us from getting wet. बारिश के मौसम में यानी इन रेनी सीजन हम रेन कोट्स और गम बूट्स पहनते हैं। ऐसे कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। ये सिंथेटिक जो फाइबर होता है ये वाटरप्रूफ फाइबर होता है। वाटरप्रूफ कपड़े हमें गीला होने से बचाते हैं। Thank you. This is all for today. May God bless you all.